and welcome to the last episode of Fulbright Women Podcast Season 1, where we try to bring the strongest and smartest women of Pakistan to share their experience, insights, and expertise with us. And today we have another such woman, Dr. Naila Sahar, who went for a PhD to the University at Buffalo, New York. And we are talking about postcolonialism, postcolonial feminism, and the future of feminism. Assalamu alaikum, Dr. Naila. How are you? Assalamu alaikum. Thank you, Safia, for having me over. No, thank you so much for making sure that we are able to do this episode. I know you haven't been feeling well for a bit, and thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you for having me. Dr. Naila, when we were talking earlier as well, there were, certain topics that we were discussing, and I kind of want to begin this conversation with asking you, what really is post-colonialism? We hear this word a lot now. Right. So, Safia, this is one of my most favorite things to talk about. Post-colonialism, when I try to make my students understand what is post-colonialism, we always start with the notion of counter-narratives. Counter-narratives kya hai? Counter-narratives are those narratives which are not the mainstream narratives. Whenever we try to understand the world, we always try to understand it in the perspective of center and periphery. And it is a common belief that the center, and we all know it, globally, the center is the West right now, and the periphery is the global North. Global North में हमारे मुल्क भी सारे आ जाते हैं. So when जब हमने post-colonialism का notion समझना होता है, we always try to understand what was colonialism and what was its impact on the whole world. And during colonization specifically, there was a notion that white man's burden is to improve the communities around the world because they are not at par with the notion of civilization that was rampant in the West. That intellectual approach they don't have, they're not as polished, as civilized as the West itself was. So colonization एक ऐसी ही सोच का outcome था. Now, when we talk about post-colonialism, we are actually talking about this notion that belief was wrong. Every culture has its own importance. Every culture has its own authenticity. And the narratives that were rampant during colonization, for example, the world was seen through the perspective of the white man. Post-colonialism is about the counter-narratives that see the world through those counter-narratives that were not at the center at the time of colonization. So post-colonialism ko hum ye bhi kehte hain empire writes back. We were a part of British Empire, for example, Pakistan and this whole subcontinent. और अब यहाँ से भी जो भी writings निकल रही हैं, जो कि अंग्रेजी में निकल रही हैं, वो actually address करती हैं West को and the condition in which West left us after they left our countries when the colonization was over. So post-colonization का notion is majorly about those counter-narratives, those narratives that were written about us, by us. So it is more about empire writing back. One question. So I understand that, right? And how the nucleus is, West is considered the nucleus, and then all the stories are the other stories, right? That are the counter narratives, as you said. I'm thinking, and it could be a stupid question, I don't know. When we're talking about post-colonialism, it is trying to negate that, right? It is trying to negate that the West is not the yardstick, right? And there are other places to look at for indigenous cultures and everything, right? So then using the term counter narrative while we talk about a theory that is trying to negate the idea of counter narrative, because counter narrative means there is a mainstream narrative, which we understand, but isn't there a friction in that idea there? Well, because this notion is all about negating those central narratives which were mainstream. अब आप एक ऐसी दुनिया में है, for example, during the time of colonization, when everybody knows you through the certain eye,
which is the eye of the white man. So counter narrative is actually, I feel it's a very powerful notion and a very powerful term, because counter kind of implicates that you're countering something. It's a head-on collision, and you are like, yes, okay, we see you, yet this is our answer to this. Yeah. So I feel I understand what you are trying to say. Okay, counter narrative might look like an idea which is kind of diminishing the authenticity of those narratives which are coming from the periphery. But you can also see it as um, as a very stubborn looking Force. into the eye of the other, and then saying, we are not this, we are this. So here it is. This is my counter narrative to your narrative, which was seen as the mainstream narrative. So Interesting. Very interesting, because this brings me to my next question, which is also something around the same, notion of there is a common narrative when we put the lens of gender and, patriarchy. And then there was a counter narrative to that, which, we can talk about in terms of feminism, right? I want you to explain to us, what is feminism? Now again, a very, very interesting notion is feminism. और हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब भी feminism की बात होती है, तो most of the people are very sensitive about these terms, and even some women are not using this term for themselves, because this term has been seen as an abuse as well to the notion of being feminine. So feminism को हमारे माशरे में जिस तरह से देखा जाता है, it's more like, oh, you want to turn yourself into a gora or a gori. You are asking for freedom from values, freedom from religion, freedom from probably, हर तरह की आज़ादी आपको चाहिए, आप तो कपड़े उतारना चाहती हैं, and all that. Now, what was feminism? सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि when we talk about feminism, तो हम actually we are asking for the equal rights. We are not asking for women to have freedom to wear whatever they want only, but it's a freedom of choice. If a woman wants to work, let her work. If a woman wants to study, let her study. If a woman wants to go out and prove herself in a certain career, please let her do that. This is what we are asking for. और यही एक ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स भी है कि एक इंसान का हक है उन सारे वसाइल पे, उन रिसोर्सेज पे जो कि उसके इर्द गिर्द है. So feminism is mainly a call of women to grab those rights which were already there. Being a human being, we owe to have those rights which are already given to men. For example, अगर आप even West की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर औरत एक आदमी $1 कमा रहा है, तो एक औरत जो है उसके मुकाबले में 70 cents कमा रही है probably. Why? When she is putting in the same effort. So अब यही वाला version feminism का, when it is discussed in our part of the world, हम इसको जो रिसर्चर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं जो कि फेमिनिस्ट डिस्कोर्सेस की बात करते हैं या फिर वो फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो वो स्पेशली सबकॉन्टिनेंट की जो फेमिनिस्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट्स, या फिर जो भी any feminist that hails from the third world. They initially they subscribed to the version of feminism which was mainstream white feminism, but then they started looking at a few problems that were inherent to the white feminism. And they said, okay, white feminism is actually not catering to our needs because our problems are different from the white woman. So they said that although we subscribe to all those issues and all those demands of rights, but we would fight for our rights in a way that is inherently different from what white feminism is fighting for. So our feminism is not the bra-burning version of feminism. Rather, it is the feminism which is grassroots, जो कि
अब grassroots feminism क्या होता है, इसके बारे में बात करने से पहले I would try to explain it. Grassroots feminism is any kind of feminism which has originated from that particular place which it is talking about. So एक और term भी होती है, उसको हम कहते हैं जी कि जिस जगह पे feminism originate हुआ है उस जगह के मुताबिक आप उसको ढालेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे. It is more about kind of an interaction and intersection of geography and feminism. So women say that we will ask for our rights, keeping in view the places where we live. For instance, अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, the women who are living in the cities, they have more rights probably, and they have a better understanding of human rights or women's rights than the women who are living in the suburban areas, probably in villages. या फिर आप साउथ वजीरिस्तान की तरफ देख लें, उधर पेट्रियार्की कहीं ज्यादा है बनिस्बत सिटीज के. चूंकि पेट्रियार्की की बात हुई है तो ये भी आई वुड ट्राई टू क्लैरिफाई कि जब हम पेट्रियार्की की बात करते हैं तो पेट्रियार्की डज नॉट मीन ओनली मैन. पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. It includes women as well. It includes both genders who are trying to suppress a certain gender, which is mostly women, yeah, transgenders. So फेमिनिज्म की बात जब आती है, जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत से लोगों की इक्वल राइट्स की बात आ जाती है और औरत के भी डिफरेंट राइट्स की बात आ जाती है, क्योंकि वाइट फेमिनिस्ट वो आस्किंग आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया उन फेमिनिस्ट ने जो कि सब कॉन्टिनेंट से थी कि हमारे डिमांड जो है वो एक्चुअली मुख्तलिफ हैं. उनमें कुछ नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक, मोहांती, फिर हमारे यहाँ से सारा सुलेरी जो कि पाकिस्तानी हैं और बाहर रह रही हैं अब. सो इन खवातीन ने ये बावर कराया और ये बताया कि एक्चुअली वी डू नॉट सब्सक्राइब to your explanation of who we are, because we are capable enough to explain what we are and who we are and what are our needs. For example, स्पीवाक का ये कहना था कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा चल रहा था तो सती की प्रैक्टिस, जिसमें कि औरत को जलाया जाता था उसके हस्बैंड के साथ ही चिता में, white people tried to stop it. And there was a massive outburst about it. There were massive, people protested against it because they said, this is our culture and you cannot tell us that our culture is not good enough. So Spivak named it as a white man trying to save brown woman from brown man. So this was kind of unaccepted as well, because they said, we do not want a savior to save us. We will save ourselves on our own. So ये कुछ premises थे, कुछ ऐसी बातें थी जिनके थ्रू एक थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म ओरिजिनेट हुआ और हमने बात की कि हम अपने राइट्स के लिए खुद लड़ेंगे, बिकॉज आवर राइट्स आर डिफरेंट और आवर प्रॉब्लम्स बेसिकली आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन हु आर लिविंग इन द western parts of the world. So ये कुछ बहस है जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि फेमिनिज्म का वर्जन एक्चुअली एक नहीं है. और हमारे यहाँ जो परसेप्शन है कि फेमिनिज्म इज एक्चुअली, अगर कोई औरत अपने आप को फेमिनिस्ट कह रही है तो she wants freedom and she wants freedom from clothing or from values. तो ये समझना गलत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की औरत उन राइट्स के लिए लड़ रही है जो उसको नहीं दिए जाते. So हमने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया है उस वाइट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से और आइडियाज से. There are like a lot of critiques that, we get to hear about feminism in our part of the world, right? The people who, and we can say that people who are against the notion of feminism or the idea of feminism is one, either they don't completely understand the idea, or two, they're overpowered by their fears, or three, the feminists in our part of the world have failed to represent
our issues in the way that they should be communicated to our people, right? There is, for example, one critique that you always hear when we talk about feminism in Pakistan, and they kind of go hand in hand. They say it's a Western idea, they're Western agents, which we have already talked about, and then they say it is against Islam, right? They bring in Islam. So can you talk about, Dr. Naila, is Islam and feminism, are they like oxymorons? So again, this is a very interesting debate right now. Okay, Islam or feminism का आपस में क्या ताल्लुक है? So I feel like we have already we have made a base to understand कि feminism actually क्या है और grassroots feminism क्या होता है. So अगर आप if you kind of interconnect or intersect the debate about feminism with the ideas of resistance, you will be better able to understand कि हमारा version of feminism क्या है. Islamic feminism is now a very, very interesting genre which everybody is studying and everybody is interested to know. Okay, Islamic feminism क्या है? मेरा PhD thesis जो था वो भी Islamic feminism के बारे में था, and it was basically about Muslim women's resistance in the age of Islamophobia. So इस resistance का जो word आता है जो कि मुसलमान औरत के साथ आता है, this is kind of a curious word कि ये resistance ऐसी क्या है, क्योंकि जब इस्लाम की बात आती है तो मेन patriarchal understanding of a Muslim woman is the one who is saying yes to everything that a man is saying. Basically हमारी understanding ये है कि औरत जो है उसकी हैसियत as a बीवी, as a माँ, as a बहन ही है, उसके अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती, और एक अच्छी औरत जो है वो चादर और चार दीवारी के दरमियान ही रहेगी, और उससे अगर वो बाहर आती है तो she is actually she's misguided by and some she's asking for it. She's asking for it, right? और अभी हमने पिछले दिनों बहुत सारे वाक़यात देखे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे कि harassment हुई है, and there has been a constant debate about whether the woman was asking for it. वो बाहर ही क्यों निकली? बाहर निकली क्यों? Right. So क्या औरत public spaces को belong नहीं करती? ये भी एक बहुत बड़ी बहस है. अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पे एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि हज़रत खदीजा herself was a very empowered woman. She had a business and she was the first employer who employed Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और उन्होंने उनको पे भी देती थी, और he was mainly looking after the business, and then she was like उन दोनों का आपस में एज का भी बहुत डिफरेंस था, बड़ी थी वो हजूर से, और फिर भी उनकी आपस में शादी भी हो गई. तो मेरा ख्याल में ये एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसको हम भूल के हम बात करते हैं कि नहीं जी, औरत की एक्चुअली और मुसलमान औरत की स्पेशली डेफिनेशन यही है कि वो हर चीज़ को हाँ कहती है, वो यस कहती है, वो अपना सर झुका देती है, उसका काम जो है अपने शौहर का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना है. अब शादी हो जाती है तो अपना करियर आराम से छोड़ देना है, दिमाग जो है उसको केटर ना करे. शी जस्ट नीड्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ हर किड्स, हर पेरेंट्स, हर इन-लॉज, her father, her brother, her husband. So mainly she is a ploy who is kind of objectified into this particular mode of objectivity where she is supposed to do what men say. So Islamic feminism की जब हम बात करते हैं तो Islamic feminism में resistance का idea जो है वो कहाँ से आया? अब बहुत सारी मुसलमान औरतें हैं who are doing a lot of Quranic exegesis, जिसको हम कहते हैं हदीस के बारे में उसके ट्रेस करना, origins क्या हैं, फिर कुरान के बारे में पढ़ना कि कुरान में औरत के राइट्स के बारे में क्या कहा गया है. अब हमारी हिस्ट्री जो है it's been very it's kind of usurped as well, in the sense that Quranic interpretations have mostly been done by men in our societies, and women have been kind of pushed back from this territory where they could interpret Quran. So सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस्लामिक फेमिनिज्म में मुझे लगती है वो ये है कि औरत ने अब कुरान को ओन किया है
और उस टेरिटरी को ब्रोच किया है, और कुरान को पढ़ के दे हैव ट्राइड टू come up with a lot of gender inclusive interpretations of Quran, where they're looking at, okay, Allah Ta'ala ने क्या कहा, and they're engaging with the religion and with the superpower जो हमारा जो एक खुदा की एंटिटी है, जो अल्लाह की एंटिटी है, उसके साथ खुद एंगेज करने की कोशिश की है. इनमें कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं. फॉर एग्जांपल आमना वदूद, who is coming up with a lot of Quranic exegesis. उनकी बहुत सारी बातें बहुत controversial भी हैं, मगर वो लिखे जा रही हैं, और वो पहली खातून है जिन्होंने बहुत एक लिंग्विस्टिकली कुरान को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशंस की हैं. और फिर फातिमा मनीसी जो कि who has gone back to the traditions of ahadith, और उन्होंने बहुत सी अहादीस के बारे में पढ़ा और उनके बारे में रिसर्च की, और she came up with this notion कि बहुत सारी अहादीस हम जो रिफर करते हैं और जिनको बार बार रिपीट करते हैं, वो एक्चुअली उनका ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो बस हम उनको दोहराते चले जाते हैं सिर्फ अहादीस कह के. और चूंकि हम एक आम मुसलमान की तो इतनी रिसर्च होती भी नहीं है इस्लाम की, so we keep on repeating them until they become a discourse, a very usual discourse in the society. For instance, she talks about this hadith जिसमें कि जी कहा जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफ़ा कि जिस कौम को एक औरत रूल करेगी वो तो तबाही के दहाने पे, that will go to ruins. And if you read the books and the memoirs which have been written by Benazir Bhutto, she has one memoir, तो she has quoted कि कैसे उनके खिलाफ की हदीस इस्तेमाल की गई थी when she was fighting for the position of for the leadership of the country. So Fatima Marnisi has gone back to that tradition, and she after this whole research, she said that ये एक ज़ईफ़ हदीस है, इसका tradition कोई बहुत authentic नहीं है. So this is this version of Islamic feminism where women are coming up and they are reclaiming this whole area of religion. They're saying we want to enter this arena which was prohibited for us, which was seen only as a performance for us. And now not only we will perform, but we will go into the depths of it to see what is the truth and what are the untruths and what is being fed to us altogether. And we will ourselves read the authentic books, and then हम देखेंगे कि इस्लाम ने हमारे बारे में क्या कहा है और क्या हुक्म है और क्या हकूक है हमारे. So एक ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का एरिया है. रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हैं जो कि औरत फॉलो कर रही है कि क्या हमें कहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे हकूक हैं. वेस्ट में स्पेशली इस्लामिक फेमिनिज्म का एक बड़ा रिसर्जेंस है जहाँ पे कि औरतें कहती हैं कि जी हमारे लिए रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हमारे राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वी आर गोइंग टू मर्ज देम टुगेदर टू लेट यू नो दैट आवर रिलीजन इज सेइंग द सेम थिंग्स दैट योर डिस्कोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर सेइंग. और दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है उनमें दोनों में एक्चुअली. सो आप जो हमें कहते हैं कि वी वांट टू सेव यू through the human rights discourses, you are not actually saving us. These are the rights that were given to us by our religion. However, they were kind of hijacked through patriarchy. However, we are going to re-own that area and define our own feminism through our own way of religiosity and the universal discourses of human rights, which are actually one and the same thing for them. Yeah, they have been hijacked by patriarchy and also the sense of imperialism, right? Because now I think about this recent most thing that happened, that how US pulled out of Afghanistan, and then somewhere the whole notion of, oh, we wanted to save the women, and how the women, they're using that, and how there's a huge kind of backlash to that narrative as well. Do you want to talk about that? Yeah, exactly. Also, I think one of the very important things that we should talk about is the notion of parda and notion of burqa and notion of tara, जिसको कहते हैं Arabic में. इसके बहुत सारे नाम हैं पर्दा करने के. How this notion of for instance अपने आप को ढकने का notion is kind of made equivalent to regression. क्योंकि जब आप चॉइस की बात करते हैं तो women should have the choice to dress up the way they want. Yeah. And
very interesting thing that whenever Kabul is shown in 1960s and 70s, it is always shown women are putting on these small Short skirts, skirts. little shorts पहनी हुई है, और that is shown as the version of progression. So किस तरह से feminism इस idea को भी counter करता है that putting on या clothing cannot define as a feminist ploy. क्योंकि अगर आप चॉइस की बात करते हैं तो फिर चॉइस तो आप फिर ड्रेसअप होने में देते हैं अगर, तो लेट देम पुट ऑन द वे इफ दे आर कंफर्टेबल इनफ इन वेलिंग, तो फिर व्हाई नॉट? व्हाई इज वेस्ट सो सेंसिटिव अबाउट द नोशन ऑफ वेलिंग? आप फ्रांस देख लीजिए, एक मुस्तकिल बहस वहां पे जारी है अबाउट वेलिंग, अबाउट बुर्किनी फॉर एग्जांपल, बीच पे बुर्किनी नहीं पहनी जाएगी. आखिर वो क्या फियर है बुर्किनी से या बुर्का से? और फिर एक इस्लाम को टोटली looking it through the perspective of terrorism, Islam as a synonym for terrorism, जिस तरह से ये नोशन फैलाया गया है, उसने क्या इम्पैक्ट किया है औरत पे? फॉर इंस्टेंस जब मैं पढ़ने गई थी अमेरिका में, तो मेरे से मुस्तकिल एक सवाल होता था कि नाइला, हाउ आर यू देयर फॉर अ PhD व्हेन योर कंट्री वुमेन आर नॉट इवन अलाउड टू गो टू स्कूल्स? क्योंकि वहां पे हमारे, जब मैं गई थी तब मलाला वाज, इवन नाउ शी इज अ वेरी हॉट टॉपिक, एंड आई वाज सीन थ्रू दैट यार्डस्टिक ऑफ मलाला इमेज, जहाँ पे मुझे इस तरह से ही देखा जाता था कि नहीं जी, औरत जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, पढ़ नहीं सकती. और मेरे जैसी बेशुमार औरतें who have grown up in cities with complete freedom to choose their universities, to choose their schools, they are from educated families, and there was a lot of chagrin against that idea. और बड़ा एक एंगर भी थी. मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने मुल्क के बारे में भी जाके पढ़ते हैं, तो आपको एक्चुअली समझ आती है that we are a very small percentage. हमारे मुल्क में एक्चुअली मेजॉरिटी उन औरतों की है जो कि अभी तक घरों में ही रखी जाती हैं, who don't have the agency to say what they want. So एक whole notion of feminism is actually, or the feminist agency or empowerment, this is a very complex idea, because I would like to talk about how I contextualized women during my PhD thesis. I said that women are doubly marginalized. Yes. They're not only marginalized by the patriarchy, which is in there, or the Muslim patriarchy, they're marginalized, or they are seen through a double lens by those Western powers as well, who want us to be a certain people, who want to supposedly save us. So do we want to be saved? Or do we want to say that we are a certain entity and we are good enough to save ourselves? अब हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा पुश बैक भी है, एक मलाला से नफरत का एलिमेंट बहुत ज्यादा है. अगर आप देखें तो मलाला से हमारे मुल्क में मोहब्बत के बजाय नफरत ज्यादा की जाती है. हमारे मुल्क में हर उस औरत से जो अपने लिए खड़े होके थोड़ी सी अप्रिसिएशन गार्नर कर लेती है, उसके खिलाफ हम नफरत देखते हैं. मलाला तो आप बात कीजिएगा मलाला के बारे में, और आपके माइंड में कोई एग्जांपल्स हैं उनके बारे में, लेकिन आप उनको भी देखिए कि एनी वुमन in any other field, if she does exceptionally well, there's some sense of insecurity among the people or this fear from her, then counter narratives जो है उसके बारे में शुरू होते हैं कि किस तरह पहुंची होगी. पिछले दिनों वो हमारी एक फेमस एक्ट्रेस थी, उनको जब एक अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, तो एवरीवन स्टार्टेड कि देयर मस्ट बी अदर नैरेटिव, हाउ डिड शी गेट इट, प्रॉब्ली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ अ वुमन is always questioned. Please talk about that. बिल्कुल, एग्जैक्टली. सो अगर हम मलाला से ही शुरू करें, शर्मीन उबैद चिनॉय की हम बात करें, तो ये दो खवातीन हैं who have garnered international recognition. So there has been a lot of, जहाँ ये औरतें अप्रिशिएट की जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, हमारे मुल्क में उनके साथ वो कुछ होती है, ऐसी ऐसी उनके बारे में आप पढ़ेंगे बातें सोशल मीडिया पे कि इंसान सोचता है कि उनका क्या कसूर था सिवाय इसके कि they actually took hold of their lives and they tried to do what they felt was appropriate for them. So आपने सफिया शुरू में आपने खुद भी बात की थी that certain narratives are kind of they are given a tinge of Western perception as well. So कुछ NGOs हैं ऐसी जो कि intervene करती हैं जब grassroots activism में, तो
उसको फिर वो बजाय इसके कि एक ऑथेंटिक चीज रहे, जैसे ही वेस्ट इंटरवीन करता है वो एक हमारे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज बन जाती है. मलाला नैरेटिव के साथ यही हुआ बिल्कुल. When she was sick, she was about to die, she was lifted through a helicopter, she was sent to a hospital in the West. So the very thing that she was lifted from here by the West has become kind of a tool to be used against her. अगर वो मर जाती खुदा न ख्वास्ता, तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा हीरोइन होती, which is such a sad thing honestly. मगर अब वो चूंकि बच गई है, वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ रही है, तो हमारे यहाँ वो बर्दाश्त नहीं की जा रही है वो चीज. क्योंकि हमारे ताल्लुकात वेस्ट के साथ हमेशा एक मास्टर एंड स्लेव वाले रहे हैं, तो वो वाली परसेप्शन जाते जाते वो जाएंगी नहीं कभी भी. और स्पेशली व्हेन वेस्ट कम्स टू सेव वुमन, that whole narrative changes face and changes its shape, and it is seen कि ये तो conspiracy है totally. So इसी तरह से शर्मीन अबैद चुनाई को भी मुस्तकिल इसी लेंस के थ्रू देखा जाता रहा है, and people have been feeling that she has been contributing in showing Pakistan as a regressive place. और मजे की बात यह है कि हम कभी भी इस चीज को, चाहे ये जितना भी सच हो, हमारी सेंसिबिलिटीज यही रहेंगी कि हाइड, छुपाएं इसको, छुपाएं छुपाएं छुपाएं. क्या छुपाने से मसले हमारे हल हो जाएंगे? आपके यहाँ होमिसाइड्स इतनी यूजुअल हो गई हैं, औरत के खिलाफ हरासमेंट हमारे यहाँ एक यूजुअल चीज हो गई है. सो किस हद तक हमें बताना चाहिए? Should international media be kept away from these things? What are we gaining from it is the question that we need to ask ourselves. Is hiding issues the only solution to the issues, or do we have to like solve them? Agar unko solve karna hai, are we sufficient enough to do that? If Malala was saved by West, supposedly, and now she's working for women in Pakistan, isn't it enough of redemption for her that she's working for us and working for all the women all around the world for their education, for their empowerment? Nothing would redeem her now, probably. So एक हमारा ये जो a very a controversial relationship with the West has also been contributing a lot into these discourses. And then our culture itself, if we look at it, we really appreciate the qualities of just being just complying to the rules, right? Being quiet, submitting, especially when it comes to women. वैसे भी generally, but when it comes to women, these qualities are like really appreciated in women, and they're encouraged to, absorb more of these qualities. Be quiet, submit to it, compromise, So in such cases, when women try to own their agency, right? When they try to be vocal about their rights or what they see, that is deemed controversial or Western or un-Islamic, right? So यहाँ पे Dr. Naila, you talked about some very interesting things, because एक तो ये problem है. दूसरा, when we bring feminism, right? फौरन आता है कि okay, there are Western tools in the in the theory of feminism that have been applied here, and perhaps that's why misrepresented in the context of our culture, right? Then that means there's a need to have our cultural-driven feminism, right? So that we use tools and from our own, within our own culture, right? I kind of want to bring that Aurat March into it, right? They're girls, they're women, a group of women, and everyone came together to talk about our issues, be vocal about them, and look at the kind of they got a variety of response. But I want you to talk about their struggle, their representation of their version of feminism, and our culture. So Aurat March has again been a very interesting phenomena in the recent times, जो कि पहले शायद experience नहीं किया गया था. अब Aurat March के भी दो facets हैं. एक तो ये कि हम इसको कहते हैं जी grassroots movement है, क्योंकि ये originate हमारे मुल्क से की.
और इसमें जो स्लोगन्स यूज किए गए थे दे आर वेरी मच आवर ओन, अपना खाना खुद गर्म करो, इसके अलावा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसपे कि बहुत लंबी एक बहस चली कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की क्या 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 मतलब है, क्या आप चाहती हैं कि आप अपना जिस्म जिस भी तरह से इस्तेमाल करें। मगर औरत मार्च में जिस तरह का म्यूजिक यूज हुआ, जिस तरह से औरतें इकट्ठी हुई, जिस तरह से उन्होंने मसले उजागर किए, they talked a lot about harassment, they talked a lot about, their objectification. We say that is a very indigenous version of feminism. Another facet of this Aurat March has also been how this has been hijacked by the elite movement. Yes. For example, and most of us, being very honest, it's been 3 years I'm back after my PhD, and मैं अभी तक औरत मार्च में जाने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है, हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है. But also I've also been quite careful from subscribing myself to kind of, I've been kind of critical towards it as well, because जब लाहौर में भी मैंने औरत मार्च को थोड़ा ऑब्जर्व किया, तो आपके चंद एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से कि औरतें इकट्ठे होके उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए, और ऑफ कोर्स आई वुड नॉट नेगेट कि बहुत बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंडिजिनस उसकी स्पिरिट है, मगर फिर यहाँ पे आ जाते हैं द क्वेश्चंस अबाउट प्रिविलेज एंड एक्सेसिबिलिटी. Who is the woman who is allowed to go out in public? Who is this woman who has the accessibility to such platforms? And one more very, very important topic or very important question when we talk about feminism is who is talking on behalf of whom? So, जब ये सवाल आ जाता है कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है या who is representing whom, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं. चंद लड़कियां जो कि वेस्टर्न अटायर्स में हैं, जब वो पाकिस्तानी औरत के हकूक के बारे में बात करेंगी तो वो मजाक तो बनेगा, क्योंकि जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो खुद कहाँ है. पीपल आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, एंड देन मोस्ट ऑफ द मेन दे वर लाइक वो वाली औरत चूंकि नहीं है, इसका ये मतलब है कि उस वाली औरत को या उस तबके को जो कि आप कह रही हैं पिसावा है, वो तो वहां पे चूंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसका मतलब है वो तबका तो अपने आप को पिसावा समझता भी नहीं. So these have been a few problems and a few issues which have been talked about when we talk about Aurat March. However, जब औरत मार्च की तस्वीरें बाहर आती हैं या उस मूवमेंट के बारे में बात की जाती है, तो कुछ तस्वीरें या कुछ उसकी मूवमेंट्स देख के बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू रैलीज केम आउट ऑफ हैदराबाद, then a few came out from other smaller cities, and those looked like more authentic, more agenda driven, more like true to nature and true to their spirit than the ones that were taken out in the cities. जो आपने क्लास की बात की है, right? That is true and that is unfortunate. But Dr. Naila, then if we look at a macro picture, right? क्लास वहां पे भी हमें शो होती है in terms of, ये भी एक बहुत बड़ी क्रिटिक अक्सर हमें सुनाई जाती है that बहुत सारी NGOs that are run by, कि elite class की वो, women from the elite class, they open up NGOs to get the money from the West. ये भी एक क्रिटिक आती है. ऐसा नहीं है कि इसमें को ये 100% सच्चाई है या बिल्कुल भी ये सच नहीं है, right? There is some element of truth to that as well. तो इसके बारे में जो हम बात करते हैं, ये आ गई क्लासिज्म, right? कैपिटलिज्म, क्लास की बात आ गई. इसको करने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए, अब हमने इतने सारे आइडेंटिफाई कर लिए. There is class, there is capitalism, there is patriarchy, there is religion, right? And there's so many other things that perhaps we were not able to cover in our conversation here, right? Looking at all of these things, inclusivity, talk about हम किस तरह future of feminism in Pakistan, किस तरह उसको थोड़ा सा substantial and progressive बना सकते हैं, inclusive बना सकते हैं.
देखिए, इंक्लूसिविटी के लिए सबसे पहले हमें एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा. नाउ एक्सेसिबिलिटी ऑफ व्हाट? Accessibility of resources, accessibility of awareness, accessibility of, education, knowledge. अब मेरा ख्याल में वो औरतें जो कि एक मेन स्ट्रीम शहरों में बैठी नहीं है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जाएं और वो एक अवेयरनेस भी फैलाएं अबाउट राइट्स, अबाउट डिस्कोर्सेस ऑफ राइट्स. मगर फिर उसमें भी एक और मसला भी आ जाता है कि हर औरत आपकी तरह की फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ चॉइस को एस्क्राइब नहीं करती. There are a lot of women who are happy in their cocoons. They're happy being housewives. They're happy serving people. So क्या आप उनको जबरदस्ती निकालेंगे और कहेंगे कि no, follow my version of feminism? So feminism की basic understanding that this is actually trying to freed women from their cultural values, ये एक गलत नोशन है. फेमिनिज्म इज मेनली अबाउट चॉइस, जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से खुश हैं तो आप खुश रहें, बट नो योर राइट्स, नो हु इज कंट्रोलिंग योर राइट्स. सो आप किसी पे अपना वर्जन ऑफ फेमिनिज्म लागू नहीं कर सकते. और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि फेमिनिज्म कोई एक चीज नहीं है. इट हैज मल्टीपल फैसेट्स and these facets make it very very complex subject matter because it has layers of cultural and material capitalism as well, जिसमें कि आपकी क्लास के इश्यूज भी आ जाते हैं, आपकी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज भी आ जाते हैं. सो एक तबका दूसरे तबके पे लागू नहीं कर सकता कि ये है फेमिनिज्म और आप इसको पकड़ें और आप इसको प्रैक्टिस करें. It's not like that. But that is a very valid point because मैंने ये भी देखा है in women. I think the onus is also on us to take the cause forward, right? And the concept of sisterhood, and not have that divide, whether the divide is coming from the lens of class, because वो बहुत बड़ा divide है कि हम ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, have subscribed to a certain class and money, they then start looking down upon our own women who perhaps don't have the same kind of privilege, with the same concept that you just said कि इनको अपने rights पता नहीं, yet they're not happy because our idea of happiness and our idea of empowerment sometimes is Western centric, right? So the need to be inclusive, the need to understand your own culture, and the need to empower each other, and the need to have this concept of sisterhood, that is most like crucial. बिल्कुल ठीक. और इसके अलावा एक बहुत important बात, I feel like probably we are going towards the end of our conversation as well. तो मे बी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्पीवाक ने कही थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थेरिस्ट हैं ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म. शी सेड दैट सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक. और सबाल्टर्न उन्होंने टर्म मेजरली औरत के लिए इस्तेमाल की थी, और उस औरत के लिए जो खुद तो बात नहीं करती है अपने हकूक के बारे में, मगर उसके बारे में कोई और बात करता रहता है. So when she said that subaltern cannot speak, she did not mean that subaltern cannot come on that dialogical level of conversation. Rather, she talked about systemic violence where the subaltern is not being heard, where the subaltern is not even talked to. So, the subaltern needs to be talked to. मुसलमान औरत भी जब अब लड़ती है अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल डायस्पोरा में स्पेशली, देयर वॉइसेस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज मोस्टली दे आर बीइंग reinterpreted and represented by someone else, and they say that no, you need to listen to us. Subaltern needs to be heard now. Subaltern needs not someone to talk, someone should not talk about them. They need to be talked to. They need to be heard. They need to be stopped, reinterpreted. So एक ये नोशन कि आप जाएं और बात करें और उनकी आवाजें सुने और उनकी आवाजें फैलाएं, बजाय इसके कि आप उनको रिप्रेजेंट करें खुद से. Exactly. I think one of the major steps towards inclusion would be talk to the subaltern. Subaltern needs to be heard now.
honor their agency. That's correct. Thank you so much, Dr. Naila. As I don't know if I've told this to you, but this is our last episode of the season, and I couldn't be happier, to have had this conversation with you as the last episode. Thank you so much for your time, and I really hope you feel better. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Have a great day ahead. Bye-bye.